Hello friends, so today we are up with grade 10, chapter number 1, A Triumph of Surgery, from the book called A Footprints Without Feet. Well, in this chapter we are going to learn about a dog, like how a dog suffers from an illness and how he overcomes his illness through the help of a doctor called Dr. Harriet. Okay, so the name of the dog is Tricky. So let us begin without wasting any minute anymore. So Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? So basically we know here a few things. That Tricky is a small dog and he is overly pampered and overly fed. मतलब उसको ज़्यादा खिलाया गया है और उसको कुछ ज़्यादा ही पैम्परिंग की जा रही है उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा. और फिर क्या होता है, ही फॉल्स इल एंड दैट हैपन्स टू मेक मिस्ट्रेस of it to consult a veterinary surgeon. Now, whether the surgery takes place over the dog or not, or whether the dog recovers or not, let us study the chapter in detail for that. I was really worried about Tricky this time. So the doctor, the sentence is spoken by doctor. It says that I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. So he was really worried about Tricky the dog, and immediately the moment when he saw Tricky and its mistress over the street, he immediately stopped his car and got out of his car. He had become hugely fat, बहुत ही fat हो चुका था, like a blotted sausage. एक meat है sausage rectangular form में. So एक रेक्टेंगुलर सॉसेज जैसा वो दिख रहा था. अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चार कॉर्नर पे चार लेग्स हो. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रूमी, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और कॉन्स्टेंटली उसकी आंखों में से जैसे पानी निकल रहा हो. रूमी मीन्स स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, आगे देख रहा था एंड उसकी जुबान जैसे उसके मुंह से कॉन्स्टेंटली जॉस के बाहर निकल रही थी. मतलब इट टिपिकली लुक्ड सो वियर्ड देन द ऑर्डिनरी डॉग, एंड दोज वर द सिम्टम्स ऑफ फॉलिंग इल, एंड एग्जैक्टली Tricky was a victim of illness. Okay, Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was listless, Mr. Harriet. That means he was so ill, he didn't look normal, as if he was so lethargic. इतना आलसी हो गया था Mr. Harriet. He seemed to have no energy, जैसे उसमें एनर्जी हो ही नहीं. I thought he must be suffering from malnutrition. मुझे लगा कि उसको खाना कम पड़ रहा होगा और इसकी वजह से उसको इलनेस आ गई होगी. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो क्या कहती है कि तो मुझे लगा कि उसको खाने के बीच में भी थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा मॉल्ट देती हूँ, ठीक है, और फिर कॉड लिवर ऑयल जो फिश ऑयल है, ठीक है, मॉल्ट को एक सीरियल भी कहते हैं, ठीक है, सेरल्स है, और फिश ऑयल उसको देती है और बीच में उसको एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी देती है रात को सोने से पहले, सो दैट उसको अच्छी नींद आए.